सो हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे। एस्टिमेशन जैसे कि आपको पता है, अंदाज लगाना कि एक्चुअली ये वैल्यू, सपोज आप 1 किलो पटेटो बोल रहे हैं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम पटेटो में एक्चुअली कितने नंबर्स, कितने पटेटोज रहेंगे। तो उसके हिसाब से आप अगर एक अंदाज लगाएंगे, छोटा साइज है बड़ा साइज है, उसके हिसाब से अगर आपको दिखता है थोड़ा बड़ा साइज है और 100 ग्राम के करीब एक पटेटो होता है, तो 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम में आपको 10 पटेटोज होंगे, 10 नंबर ऑफ पटेटोज। अगर थोड़ा छोटा साइज है, 50 ग्राम्स के करीब हो रहा है, तो आपको 20 नंबर्स ऑफ पटेटोज मिलेंगे। तो ये एक एस्टिमेशन है, राइट, अंदाज, जो कि हम मोस्टली बहुत सारे केसेस में डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अंदाज लगाना कि ये क्वांटिटी कितना होगा, और मतलब ऐसे हाइट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हम अंदाज लगाते हैं। पर ये जो अंदाज होता है प्योर लाइक लाइक इंट्यूसिव होता है मोस्टली। आपके हिसाब से आप ये अंदाज लगाते हैं, बट फिजिक्स में जब हम एस्टिमेशन बोलते हैं तो ये थोड़ा साइंटिफिकली हम करते हैं, सो दैट थोड़ा प्रिसिशन और जो एक्यूरेसी लेवल है इसमें एस्टिमेशन में थोड़ा बढ़ जाता है। तो आज हम ये एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया था, जो साइंटिफिक नोटेशंस में हमने बताया था 10 टू द पावर जो भी है, डिजिट है 10 to the 5 और 10 to the -5 जो भी है, ये ऑर्डर बताता है एक्चुअली हाउ बिग और स्मॉल द क्वांटिटी इज, इसके बारे में बताता है। और एस्टिमेशन सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बट इसमें और थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा है, प्रिसिशन लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टिमेशन क्या होता है, और कुछ कुछ ऐसे सिंपल एग्जांपल, जैसे थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसको हम कंसिडर करेंगे। एस्टिमेशन क्या होता है एक्चुअली, what do we mean by estimation, and how we can do, how we can estimate uh, measurements, estimate can be used in measurements, okay। तो मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ स्लाइड। सेकेंड, ओके। तो ये हमारा स्लाइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एस्टिमेशन के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, और ये एस्टिमेशन मैंने जैसे बोला, क्या अंदाज लगाना, बट इन साइंटिफिक वे। फिजिक्स में एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है वो हम जानना चाहेंगे इधर। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, estimate the speed with which human hair grows, okay। so ये अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बियर्ड सा एस्टिमेशन है, estimate the speed with which human hair grows, okay। तो ये आप एक कार्टून ऐसे टाइप देख सकते हैं, ओके। सो थोड़ा सा, सो हेयर स्पीड लिमिट 1/2 इंच पर मंथ। तो अगर ये क्वेश्चन है तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू एस्टिमेट द स्पीड विथ विच ह्यूमन हेयर ग्रोज। तो इसके लिए अगर मैं एक सिंपल सा एक एजम्पशन या फिर जो भी आप बोल सकते हैं कंसिडर करूँगा, तो फिर उसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं ये वैल्यू। सपोज मैं बोलूँगा कि मैं जो हेयर कट करता हूँ एवरी 2 मंथ्स में करता हूँ, और जो बार्बर है वो मेरा 2 सेंटीमीटर तक, मतलब 2 सेंटीमीटर हेयर जो लेंथ है वो काटता है, ठीक है। तो अगर मैं 2 महीने में एक बार जाता हूँ सलून में हेयर कट करने के लिए, और 2 सेंटीमीटर मेरा बाल जो है बढ़ा हुआ रहता है, और मैं 2 सेंटीमीटर कट करता हूँ, तो सपोज एवरी 2 मंथ्स में मेरा 2 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ता है। ऐसे ये एक एजम्पशन है, एक एस्टिमेशन टाइप मैंने लिया। अगर तो मतलब मंथली अगर मेरा 1 सेंटीमीटर हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो फिर मैं उसका स्पीड निकाल सकता हूँ इजीली, है कि नहीं। तो हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम भी है, तो लेट अस यूज दोज वैल्यूज एंड एस्टिमेट इट, ठीक है। किसी ने बोला मेरा 1 महीने में 2 सेंटीमीटर निकल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द स्पीड एट विच योर, आई मीन, हेयर ग्रोज, राइट, एट व्हाट रेट योर हेयर ग्रोज, राइट। सो सेम वे हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू मैंने जस्ट एजम्पशन ऐसे लिया,
अगर मैं 2 सेंटीमीटर इन 2 मंथ्स लिख रहा हूँ, तो 2 मंथ्स लिख रहा हूँ। एक ये जनरल एजम्पशन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा तो ये गलत है। ये पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली इट विल वेरी, बट ये कोई भी अगर सच, if you get some questions like this, then first thing is you need to make your assumption solid. You need to make the assumption, make this statement clear, okay, that what is the actually, the growth in a certain period of time. Then you just divide it, like you need to write in SI units, so you need to convert in meter per second. So if I'll write what is the speed here, okay, if I'll write what is the speed, v लिख रहा हूँ मैं, स्पीड के लिए 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²मीटर ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स है 2 × 10⁻²। एंड फिर ये 1 मंथ में, ये 2 मंथ्स है तो 2 लिखो, नहीं तो ये 1 सेंटीमीटर पर 1 मंथ करके भी कैलकुलेट करो। जैसा है 2 टाइम्स, तो फिर जो भी है 2 मंथ्स के लिए 30 डेज, 30 डेज अगेन 24 आवर्स, राइट। 24 आवर्स, 1 आवर इज 3600, ओके, सेकेंड। सो ये सारा वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। फिर ये कैलकुलेट कर दो और तुम्हारा जो भी वैल्यू आया दैट विल गिव यू द वेलोसिटी। सो ये अगर एस्टिमेट हम करते हैं, ये कम्स अराउंड 4 × 10⁻⁹ साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे, हम बोला था मैंने -9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड है, तो हमने ऐसा एस्टिमेट किया कि द स्पीड विथ विच ह्यूमन हेयर ग्रोज, कंसिडरिंग दिस दिस assumption, लाइक 1 मंथ में 1 सेंटीमीटर का ग्रोथ है। तो ये these are all estimations, okay। Similarly, if somebody will ask you estimate how many grains of sand are required to fill the volume of the earth, पूरा अर्थ को अगर हमने सैंड से फिल करना है, ठीक है, टोटल, आई मीन जस्ट assumption, like I said, it is estimation, so you may get some weird question like this, ठीक है। तो अर्थ का जो भी वॉल्यूम है 4/3, अगर स्पेरिकल हम इसको कंसिडर करते हैं, 4/3 πr³, r is the radius of the sphere or earth, okay। So you consider that and then you put sand into it. So how many grains of sand actually you need? How many grains of sand you need? The radius of the earth is about 6 × 10⁻⁶ meter. So r हमें given है यहाँ पे. Suppose 6 × 10⁻⁶ meter is the radius of the earth. So I can calculate the volume of earth. So simply by substituting this r value, 4/3 pi is 3.141 whatever 14 into r³, that is 6 × 10⁻⁶ meter इसका cube, right? So you calculate this value. This value gives you around the volume it gives us. Let me just see. It gives you 8 × 10⁻20 meter cube. So it gives you 8 × 10⁻20 meter cube. You can use a calculator and verify this. So which can be, this 8 is actually close to 10. So if I write in terms of order, then it will give me 10⁻21 meter cube. I can write just by approximating it, okay, to the order. So that's what I said, magnitude and sorry, order of magnitude and this estimation are very close to each other. I mean, conceptually they are the same. Here you are estimating, and estimation means not exactly accurate, but it is very close to the accurate value. Okay, so that's the overall objective of estimation. So you can write 10⁻21 meter cube you got for the volume of the volume of earth, and then you find out 1 grain of sand. So 1 grain of sand, if I'll just consider, like in sand grain is of the order of 1 mm. Again, I'm emphasizing on the order of the magnitude. So dimension of one sand, if I will take 1 millimeter, okay, 1 mm, 10⁻³ meter, then you can find the volume. What is the volume? You can just take the cube of that. Again, 4/3 pi. These things can be ignored. 4/3 r³. Again, the radius, or if it is taken as 1 millimeter, this 4/3 pi multiplied with 10⁻³ cube. So 4 pi/3 can be just ignored, and you can just write what is the order of that volume of one grain of sand. So if I'll write that, then I can say, okay, if I will take 10⁻³ meter, okay, I said 1 mm, okay, that's the radius of the grain of sand.
So 10 to the power minus 3, okay, minus 3 meter. And if I'll write volume, volume is really equal of the order of, okay, 10 to the power minus 3 cube. Okay, you can just write 4 by 3 pi r cube and all, but again, here, like, we just, estimated this value to be like 10 to the 21. Similarly, I can just take the order, like, just the cube of this, so it gives me 10 to the power minus 9 meter cube. Okay, so you got this to be 10 to the power 21 meter cube. This is your volume of earth. And if you are filling it with sand, and each grain of sand is having a volume of 10 to the power minus 9 meter cube, then just divide it with 10 to the power minus 9 meter cube. Okay, so you got 10 to the power 30. Okay, so you need 10 to the power 30 sand grains of sand, or some, sand grains to fill the whole earth. So that is what is estimation, we can do this way, right? Okay, so there are a few more questions I am just showing you, um, so that you can just try it out. Estimate how long the line would be if all the people on earth were to hold hands in a straight line. Calculate how many times it would wrap around the earth at the equator. The radius of the earth is about 6 into 10 to the power 6 meter. Okay, so at the equator, the radius is given 6 into 10 to the power 6 meter, and you need to estimate how long the line would be, if all the people on earth were to hold hands in a straight line. Again, you have to estimate it. So initial value, you need to give something like, if I'll say, if you will stretch your hand, if a person will stretch hand, then up to what distance actually it will cover. So that is the assumption that you need to take. And this assumption cannot be like 10 meter, 20 meter, something like this. It has to be very realistic. Okay, so I would say, okay, some around 1.5 meter is the, like, is a desired value. 1.5 meter, up to 1.5 meter, you can see. Okay, so average person, if you will stretch your hand like this, okay, so 1.5 meter, you can see, then the radius of the earth is given. So take these two values and then find out. So how to do this, I'm just giving you, like, so you have, we said, if one person will stretch his hand, then it may cover 1.5 meter. And the population of the earth also you need to take into consideration, around, 10 to the power 10. Okay, so that's again, these data you need to just, they will be given, it will be given in the question, or you need to just find it somewhere, like, approximated value, not very, it has to be realistic, not any value, any random value cannot be considered here. So 10 to the power 10, and you got this 1.5. Okay, so by this you can just multiply, and you can find out exactly what is the, order. Okay, so here I can say it's still 1.5 into 10 to the power 10. Okay, so that gives me of the order of 10 to the power 10, I can write. So this is the order I got, 10 to the power 10. And then if I want to find out at the equator, suppose this is earth, and at the equator, it is, the question says at the equator, something like this. So you got the circumference of earth here, so you can consider this to be 2 pi r. So substitute those values, 2 into 3.14 into whatever r value is given as 6 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6, okay, meter. So write the r value, you estimate it. This is around 4 into 10 to the power 7 meter. Calculate it using a calculator, and then take the order. 4 into 10 to the power 7 can be approximated to 10 to the power 7. Okay, if I will consider the order. So 10 to the power 10, here you got 10 to the 7. So now if you want to calculate how many times it would wrap around the earth, then just divide it, right? So you have 10 to the power 10 meter is the length of the, the chain that is created by holding hands. And you have this 2 pi r to be 10 to the power 7. So take 10 to the power 10 divided by 10 to the power 7, both are in meters, so it cancelled. You got 10 to the power 10 minus 7, that is 10 to the power 3.
10 to the power 3 times it would wrap. Okay, so 10 to the power 3 times it would wrap. Okay, so around the equator, so 10 to the power 3 times, this is what we got. Okay, so this is all about estimation. Now if in some questions, like you may get questions like this in estimation. ठीक है, तो इसमें क्या है, आप अगर देखेंगे फोर्स है और टाइम है, फोर्स एंड टाइम ग्राफ। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या है, जब हम एरिया लेंगे, द एरिया बाउंडेड अंडर दिस फोर्स टाइम ग्राफ, ओके, दैट विल गिव यू व्हाट, force into time will actually give you what, force into time will give you impulse, right? These are the things we will discuss later. So actually, okay, let me just write it here. um, from your Newton's formula, you said F is equal to dp by dt, or rate of change of momentum. Okay, or in simple terms, if you don't want to take the write in a derivative form, then you write change in momentum over time. So this F times del T gives you the change in momentum, that is del P. What is change in momentum? The final momentum, which is mass into final velocity, minus the initial momentum, which is mass into the initial velocity. So this is also called impulse. Okay, so now in this question you are given with force and time, and if you need to estimate what is the impulse here. Okay, so how to do it? From the only thing we need to estimate what is the graph or the area bounded by the graph. So now here you have a small division. If you will see any small division, you got this value is 1 and this value is 2. So this gives you what, actually 1 unit actually gives you 2, right? So how many such units you have, right? You just count it like 1, 2, 3, 4, 5. Almost these are small values that is not there, but I can just estimate it full as full. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Here if you'll consider 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So if I'll take this 26 into 2 full value, suppose I just, this is just estimation, so it will always be given as a range, as the desired answer. So there is no specific value actually. So I considered these things to be full, you may not consider those, so it's fine. So you got 52 over here, and then the half values I can see, suppose half, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, and whatever 7, okay. So these 7, and suppose this one 8. Okay, then I will say 8 and half means what, this is half means what, half of this 2 unit is 2, so 8, then you have 1, so half of that unit, so 8 into 1, that gives you 8. So you got 52 plus 8, that is 60, right? But this is not an accurate value. There can be some uncertainty, because you can see some squares are not exactly full, some squares are not exactly half of the squares that we considered as half. So there will be a minimum uncertainty or tolerance value, which can be considered the tolerance value of at least 1 unit. Okay, 1 unit, that is 2. So we can write it as plus minus 2. So our estimation may be 62 or maybe 58. So within that 58 to 62, any value is desired value. So these are the things we call estimation. We call these things as estimation, right? So it gives you a more accurate and precise value. इसे अंदाज नहीं लगा रहे हम, और थोड़ा बहुत precise और accuracy level भी बढ़ रहा है. So these estimation things are very much or widely used in physics when you are dealing with very very small quantities, physical quantities, small dimension, or very small value, magnitude, in terms of magnitude I'm saying, or really big values like in the scale of astronomy and all. So these estimations are very common, so you should know what is estimation and how we use it in physics, okay, or in measurements. Okay, thank you for watching. Thank you.